So very good evening all the participants. We have already discussed up to case law number 20, है ना? So अजय जायसवाल जी, पहले वाला बताइए, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, दो लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो क्या केस है? व्हाट इज दिस केस लॉ? स्क्रीन भी आपके सामने है फॉर योर रेफरेंस. यस इट्स अ डिस्प्यूट लिखा हुआ डिस्प्यूट बट मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली ये. नहीं, डिस्प्यूट थोड़ी है, Sir, इनोवेटिव. it is I think Maharashtra. It is between the IBC versus Maharashtra special enactment. हाँ, नहीं, अब देखिए मैंने लिखा हुआ ना, व्हाट इट डील्स विद 238. 238 का क्या Yeah. मतलब समझ में आ रहा है? 238 सेक्शन 238. सेक्शन 238, बिकॉज अच्छा. सेक्शन 238 डील्स विद overriding effect. Yeah, overriding They between the said, state legislation and yes, so IBC. they said the two section as per section 238, IBC is to have overriding effect over other laws. ठीक है? Now if we read, we will devote just 10 minutes to this, है ना, 20 case laws, and then we will move on to 21. So 238 says the provisions of this code shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the timing in force or any instrument having effect by virtue of any such law. So overriding effect. Basically, 238 if you see, so it says that these provisions of this code to override other laws. Second was the issue of repugnancy here. So whenever there is any repugnancy between a state legislation and a central legislation, then which one will prevail? Central legislation. Central. Suppose there are two central legislation, then which one will prevail? Latter. Right. Yeah. And they say that during moratoriums, directors, because their powers are suspended, so they cannot file an appeal. But this being the first case, they allowed it. Hai na? So this way you can remember this case. And they say even if a state law allows moratorium, it is simply deferment of debt. Debt is still due and payable. And application under IBC can be filed. So these were some of the observations of the Supreme Court. Mobilox. This is a case which refers to which matter? Pradeep ji? Mobilox Innovations. Basically, it says that whenever there is a dispute, application under section 9 cannot be filed. Because these two companies, Mobilox and Kirosa Software, they were executing a project for Star TV, and there was a non-disclosure It is agreement. related to dispute. Yeah. Yes. And they said that the breach of a non-disclosure agreement amounts to dispute. Yeah. Next case is State Bank of India versus V Ramakrishnan. तो क्या केस था इसमें प्रदीप अपने अजय जी? सर मुझे ये पढ़ना एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाया हूँ. मैं आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन एक्चुअली. मुझे हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी एक इसमें केस तो ये था कि जो रामाकृष्णन है ना, ही वॉज ए डायरेक्टर एंड ही हैड गिवन ए पर्सनल गारंटी. सो दिस ही वॉज ऑफ द व्यू दैट मोरेटोरियम डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर. स्टेट बैंक ने ये बोला कि मोरेटोरियम डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर. वी रामाकृष्णन क्या बोल रहे थे? वी रामाकृष्णन बोल रहे थे कि भाई once CIRP is in place, then moratorium applies to guarantors also. This was the main issue. only applied to the corporate data. नहीं, corporate नहीं, corporate क्या चीज? Moratorium only applies to the corporate data. Right, very good. हाँ, अगला केस था पायोनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें इशू क्या था? ये जो सेक्शन, an explanation was inserted in section 58F, by virtue of which this home buyers, they were made the financial creditors. So Supreme Court said it was the intention of the law from the very beginning, and it was just inserted by way of an explanation. Another point was that RERA and IBC can coexist, but if there is any confrontation between the two, then IBC will prevail. ArcelorMittal. So this was a case on this 29A. There were two applicants, Arcelor AMIPL and New Metal. So both were found ineligible by virtue of 29A, but Supreme Court invoked Article 142. What is Article 142? Interpretation of dispensation of natural justice. So Article 142 says that Supreme Court, in the interest of rendering justice, they can invoke their inherent powers. So by invoking Article 142,
So they allowed them one more time. Where there is a no Resolution. clarity in the Yes. Next is committee of creditors. So this way you have to remember. इस तरह से आपको याद रखना है कि नहीं. आप अपने Yes. नोट्स यहाँ बना सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स versus Satish Kumar Gupta. Actually, this case dealt with various issues like what is the role of RP, what is the role of resolution applicant, what is the role of COC, what is the jurisdiction of NCLT and NCLT. Various matters were discussed in this case. BK Educational versus Parag Gupta. Limitation Act was discussed and retrospective application of 238A. Because 238A also was inserted by way of this second amendment in 2018. So they said that Limitation Act was there from the very beginning. So it says that 238A applies retrospectively and Limitation Act will apply. Chitra Sharma, it was a home buyer case and CIRP, 270 days were already over, but Supreme Court allowed it once again. They said you include the home buyers and an ordinance was issued to include home buyers as this financial creditors. Anuj Jain वाला केस क्या था? Anuj Jain में it was a PUFE transactions. Lenders of Jayaprakash Associates Limited, they were mortgaged the land which belonged to JP Infratech Limited. ठीक है? And lenders wanted a place in COC of JP Infratech, which was denied. And it was said that it is a preferential transaction. ठीक है? Swiss Ribbons में भी constitutional validity of various provisions was challenged. इस तरह से देखो थोड़ा थोड़ा याद करोगे ना हो जाएगा, 2-4 बार याद करोगे. बाबूलाल वर्धर जी गुर्जर में क्या इश्यू था? इसमें यह था कि लिमिटेशन एक्ट. केस शशिधर में क्या था? कमर्शियल विजडम ऑफ COC. बिकॉज इन दिस केस एक्चुअली at that point of time the percentage for approval of a resolution plan was 75%. And COC approval was not granted to that particular resolution plan, and then the NCLT passed a liquidation order. But in the meantime, the percentage was reduced to 66. So then COC applied once again to the NCLT to withdraw the liquidation order. But the Supreme Court said ultimately that once a resolution plan has been rejected because of want of the requisite majority, you cannot approve that plan. And that amendment from 75% to 66 is prospective in nature. ये वाला इशू. मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो सेकंड प्रोवाइजो आया है to section 7(1) that was challenged, which talks of not less than 100 of allottees or not less than 10% of the total number of allottees. So this amendment came because भाई इसमें ये था कि builders were against this. बिल्डर बोलते थे भाई ठीक है एक ही आद, because at that point of time limit was also 1 lakh only. अभी 1 crore नहीं हुआ था. तो उस केस में क्या हुआ, ये कहते थे भाई देखो एक ही होम बायर है, उसको प्रॉब्लम है तो वो इनिशिएट कर सकता है. तो ये प्रोविजन लाए थे कि भाई नॉट लेस देन 100 ऑफ सच अलॉटीज एंड नॉट लेस देन 10%. पर फिर इसको भी चैलेंज कर दिया. उन्होंने कह दिया भाई यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस इट रिट्रोस्पेक्टिवली. उसमें यह भी कहा था कि भाई जितनी भी एप्लीकेशंस अगर पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ दिस अमेंडमेंट, आपको 1 month के अंदर यू हैव टू डू द करेक्शन. आपको इतने नंबर अप्लाई करना, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन, है ना. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डू, इट इज इन ऑर्डर. पी मोहन राज में वो चेक बाउंसिंग केस से रिलेटेड है बेसिकली. तो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ चेक बाउंसिंग. सो दिस वाज द इशू इन दिस केस. ठीक है. गुजरात ऊर्जा विकास निगम, इसमें क्या हुआ कि दिस पावर परचेज एग्रीमेंट वाज एक्चुअली कैंसल्ड एंड on the ground of because section 10 application has been filed. So Supreme Court said that simply filing of an insolvency application, it cannot be ground to terminate the power purchase agreement. This was the issue mainly. Arun Kumar Jagratmaka, here they said that because this person, Arun Kumar Jagratmaka, he is ineligible under 29A, so he cannot be a party to a scheme of compromise or arrangement. This was the main issue.
17, Lakshmipad Surana versus Union Bank of India. So here the issue was that CIRP was issued, CIRP was initiated against the corporate guarantor. But CD here was a proprietary firm. CD was a non-corporate person. So the issue was whether CIRP can be initiated against corporate guarantor when CD is a non-corporate person. Supreme Court said yes. In Ghanshyam Mishra and Sons versus Edelweiss, so this clean slate principle was there. So they said once a resolution plan is approved, so the doctrine of clean slate prevails, and government authorities also, they are not immune to the resolution plan. So even if there is a haircut to government authorities, they cannot subsequently raise any demand. Okay. Pratap Technocrats, in this case, a resolution plan was passed with 100% majority, but this Pratap Technocrats, he was an operational creditor and he said that I am a MSME and I own most of the operational debts. So my view was not taken and he challenged the resolution plan. But Supreme Court said commercial wisdom of COC is supreme. And then he raised various issues like pending applications, challenging the admission. So they said because the plan is already approved with 100% majority, even if some FCs were not included, so then also it won't affect the approval of the resolution plan. ABIC Singapore case was there. So in this case, resolution plan once approved by the COC and which is lying with the pending authority, whether it can be withdrawn by the resolution applicant, this was the issue. So Supreme Court said, yes, no, you can, once a resolution plan has been approved by the COC and it is lying for approval with the adjudicating authority, the resolution applicant cannot be allowed to withdraw the same. Okay. So I think up to 20 we have already covered. Now let us go to 21. ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन. तो यहाँ अभी कुछ आइडिया हो गया ना आपको इस तरह से, क्यों Yes, प्रदीप sir. जी? This is helpful, sir. है? Yeah, this is helpful in हाँ recollecting the. हाँ बिल्कुल. देखो इतना तो याद होना ही चाहिए ना आपको. Correct. तो ये कि यू कैन मेक योर ओन नोट्स, यू कैन राइट मोर ऑल्सो, है ना. आप अपने हिसाब से और लिख लीजिए, उसमें क्या है. चलिए 20. Lalit Kumar Jain versus Union of India. So what was the issue here? The issue was that personal guarantors to corporate debtors, they have been brought under this IBC. So this point was challenged. So they said, because there is a selective application. So it said, petitioner said that it amounted to impermissible selective application of IBC only to personal guarantors while excluding other individuals and partnership firms. So they said it created artificial classification without any rational nexus to the objectives of IBC. So the issue involved here was, is the central government's notification bringing personal guarantors under IBC valid? Can personal guarantors to corporate debtors be proceeded against independently under IBC? And is the classification of personal guarantors as a distinct category constitutionally valid? So Supreme Court said that personal guarantors, they form a distinct class. The court held that personal guarantors to corporate debtors have intimate connection with the corporate debtors' obligations and financial health. The classification is reasonable and based on intelligible differentia. And please note that personal guarantors, he may be a corporate guarantor, he may be an individual guarantor. Both are covered by virtue of this notification. Second is valid use of delegated legislation. The central government has the power under section 1 subsection 3 of the IBC to enforce different provisions at different times. So if we see section 1 subsection 3, so I hope you are having a copy of the code with you. So it says, section 1 subsection 3. Pradeep ji, can you read from the code if you have it? आपके पास है code? Yes, sir. Section 1. Section 1 subsection 3. Come. Part 1 में ना sir? हाँ Yeah. part में, हाँ सबसे It पहला shall come into the. section 1 ही है. हाँ, it shall come into the force on such date
as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, Hmm. provided that different dates may be appointed for different provisions of this code, Hmm. and any reference in such provisions to the commencement of this code shall be construed as reference to the commencement of that provision. Hmm. So they said that the central government has the power. Just a minute. हाँ जी, तो ये इशू और इसमें क्या था, तो दिस नोटिफिकेशन was a valid exercise of that power and aligned with legislative intent. Third is there is a no conflict in liability. The court reiterated that liability of a guarantor is coextensive with that of the borrower. Because if we see section 128 of the Indian Contract Act, so it says liabilities of the guarantor is coextensive with that of the borrower. ठीक है, and proceedings against the guarantor can continue independently even if the corporate debtor is undergoing CIRP. So there could be different situations. One situation is CIRP of CD is going on, then also you can initiate the CIRP or IRP of guarantor. Even if you have chosen not to proceed against the CD, you can directly proceed against the guarantor. That is also okay. जरूरी नहीं है कि पहले यू हैव टू एग्जॉस्ट द रेमेडी अगेंस्ट द बोरोवर फर्स्ट, है ना. सो दिस वाज द इशू 21. अब आपको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे इसको, अगर आपको ये लिखना हो पॉइंट में तो कैसे लिखोगे इसको. ललित कुमार जैन 21 देखते हैं हमने क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या, जस्ट लेट अस सी. 21 देखो हमने लिखा है सेलेक्टिव एप्लीकेशन टू पीजी ऑफ सीडी चैलेंज, है ना. थोड़ा बहुत तो याद रहेगा इससे, आप अपने हिसाब से इसको और बढ़ा सकते हो. लाइबिलिटी ऑफ guarantor coextensive with that of the borrower. वो जितना मर्जी लिखते रहो आप, है ना. कोएक्सटेंसिव, बस याद करने से मतलब है ना, क्यों याद आ जाना चाहिए आपको कि है क्या, उसमें मैटर क्या था, बस ये ध्यान में आना चाहिए. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विदर्भा इंडस्ट्रीज 22 नंबर. इससे कर लेते जल्दी हो जाएगा. Sir, one clarification. Suppose the corporate debtor fails, default. यस So, does it mean that I can first initiate the CRP on the personal guarantor यस first? इट इज अप टू यू. सपोज Okay. you already know that company is not having any assets, suppose it is a software company. Yeah. So you feel that nothing will be obtained, nothing will be achieved if I proceed against the CD. You can directly proceed against the guarantor Okay. because he has mortgaged his house and he will be Mm. interested that Okay. his house is at least spared from insolvency or bankruptcy. So he will try Okay. to pay. So it puts a moral pressure now on the guarantor. Mm. Mm. So it's up to you whether you want to proceed. You have to weigh your options. You can proceed against both. You can proceed against CD first. You can proceed against guarantor first. All options are available. Now 22. 22 says Vidarbha Industries. ये विदर्भा इंडस्ट्रीज वाला केस क्या था, एक बार पढ़िए प्रदीप जी. Yeah, facts. The Supreme Court in Vidarbha applied the literal interpretation test and held that the use हाँ of the word हाँ the हाँ use of the word may हाँ confers upon the NCLT the discretion to admit the application after it is satisfied of existence of debt. Further, it held that Section 9, subsection 5 of the IBC, by using the words shall in the context of an application made by an operational creditor, highlights a deliberate legislative intent to differentiate between applications made by financial creditors and operational creditors. So In the here review pit, actually
is section 7, if we see, section 7, 5A, I think. So section 7 says, section 7, 5A says may. But section 9, 5 says shall. So they said, even if there is a default, even if the debt is due and payable, even if the application is complete in all respects, whether the adjudicating authority can still not accept the application in case of financial creditor? The answer is yes. Because why? Because the word may is used. Okay. You can go open section 7.5 also. Please open section 7.5. You can mark in the book also, or you can highlight. Section 7, 5A. It may. The word is it may by order admit such application. And section 7.5B, if you see, it may by order reject such application. So the word used is may. And now if you read section 9, so section 9, subsection 5 भी होगा इसमें भी. Section 9, subsection Within 5. It says the adjudicating authority shall, within 14 days of a receipt, by an order, admit the application. So the word is shall. So here it says section 9.5 uses shall, section 7.5 uses may. So it is still discretion. Discretion is available with the adjudicating authority in case an application has been filed by the financial creditor, that it may still opt not to initiate the insolvency process. ये मतलब ठीक है. Sir, any logic why the भाई differentiation? लॉजिक देखो ये है, sometimes solvent companies are there and solvent companies temporarily there is a default, so you cannot initiate CIR. That is the point. So Supreme Court in Vidarbha held that the objective of the IBC is not to penalize solvent companies. Actually, the whole process of IBC is to help companies tied over their financial crisis by finding a resolution applicant. So they need not penalize solvent. Suppose it's a government of India undertaking. Okay? There is a default. So whether they will admit the application, normally they will not admit the application, although there is a default. But definitely that company will also be required to pay. There was a case with this National Textile Corporation. An operational creditor filed an application. There was a default, an operational creditor filed an application. But application was admitted also. But then they paid the amount and application was withdrawn. उस केस में तो क्या हुआ था कि पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गया था. लिक्विडेट उसने IRP ने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया था. But still that was withdrawn. So the idea But is sir, not. no, why it is not discretionary in case of financial creditor? Why it is mandatory for operational creditors? No. They said the law is like that. They said the lawmakers had this intent that in case of financial creditors, because they have deliberately. So whenever there is a rule of literal interpretation in the interpretation of statutes. So what it says, okay, whenever the lawmakers have used a particular word, they have used it deliberately with a particular intent in mind, and not it is not just a error, है ना. तो उसने बोला वहां मे लिखा है, वहां शेल लिखा, उसका पर्पस है. ठीक है. So while this is not disputed, it is also true that the IBC was designed to expedite insolvency, है ना. तो कंक्लूजन क्या है? तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ये यहां इन्होंने ना इंटरप्रिटेशन टेस्ट लगाया, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन बेसिकली. नेक्स्ट केस देखिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. आज अगर इसको आपको लिखना हो कैसे लिखोगे आप? 22 हमने क्या लिखा है देख लेते हैं. 22 में हमने लिख दिया डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए अंडर सेक्शन 7.5A, यूज ऑफ वर्ड मे एज अगेंस्ट शेल इन सेक्शन 9. ठीक है, 9 subsection 5. 9.5 को लिख दो. हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे कर दो. ठीक है ना, इससे ध्यान रहेगा. देखो 2 लाइनें हमने लिख दी, 2 लाइन से याद रहेगा भाई क्या है, सेक्शन है क्या, है ना.
नाउ 23 देखिए। ट्वेंटी थ्री है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस आनंद सोनभद्रा। तो एक्चुअली एज यू नो that New Okhla Industrial Development Authority, they give land on lease to the developers, basically. So here, the Noida Development Authority, they claimed that the unpaid lease rentals, they constitute a financial debt. ठीक है, because they wanted to be included in the COC. तो उनको पता भाई OC की तो कोई पावर है नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है ये फाइनेंशियल लीज है, बट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज नॉट ए फाइनेंशियल लीज, इट इज एन ऑपरेशनल लीज, Operational ऑपरेटिंग लीज, lease. है Yeah, ना। yeah. तो It पॉइंट is ये a है। service. हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेट इज नैरो एंड स्पेसिफिक। उन्होंने बोला कि भाई कोई डिसबर्समेंट ऑफ मनी तो है नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने कोई पैसा दिया है क्या, नहीं, है ना। वो कहता है कि फाइनेंशियल डेट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 इट इन्वॉल्व्स डिसबर्समेंट ऑफ मनी अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द कोर्ट हेल्ड दैट नो डिसबर्समेंट ऑफ मनी बाय नोएडा अकर्ड इन दिस केस, है ना। सिंपली ग्रांटिंग लीज और राइट्स इन लैंड डज नॉट कंस्टिट्यूट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी इनहेरेंट एंड नोएडा इज नॉट ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। Therefore, Noida cannot initiate proceedings under Section 7 nor participate in the committee of creditors as a financial creditor. ठीक है। So they said in this landmark judgment, the Supreme Court held that Noida isn't a financial creditor as a lease agreement with restrictive clauses cannot be determined as a financial lease. Leasing of a plot with a restrictive clause did not amount to financial lease. ठीक है। तो recourse shall be taken to Section 58D of IBC and Rule 62 and 65 of Indian Accounting Standards to determine what shall be deemed as a financial lease, as a liability should be arising from the said lease. ठीक है। So there will be generally this industrial leasing authority, they give for 99 years. Yes, Yeah, so that time, what is the whether they will be ये सब construed as final? ये फाइनेंशियल लीज नहीं है, सारी ऑपरेटिंग लीज है। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है उसमें, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिख दिया कि नोएडा अथॉरिटी इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, लीज बाय नोएडा इज एन ऑपरेटिंग लीज। सो वी हैव टू गो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें लिखा है क्या, या तो फाइनेंस लीज होनी चाहिए या कैपिटल लीज होनी चाहिए, है ना। सो इट इज एन ऑपरेटिंग लीज ओनली। नेक्स्ट नेक्स्ट केस लॉ देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24, है ना, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला केस। तो एक बार पढ़ लीजिए जरा, है प्रदीप जी, Yeah. या अजय जी आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। MBL Infrastructure Limited, respondent number 1 was set up by Mr. Anjani अंजनी Kumar कुमार लखोटिया, Lakotia हम्म, in the early 1990s. Loan or credit facilities were obtained by respondent 1 from SBI as lead bank. On the failure of respondent 1 in terms of repayment, some of the respondents, a consortium of banks, were forced to invoke the personal guarantee extended by respondent number 3, that is the State Bank of Bikaner and Jaipur, merged with State Bank of India, with RBL Bank having issued notices under Section 13 of SARFAESI Act, followed by Allahabad Bank and State Bank of Bikaner and Jaipur. RBL Bank filed an application to initiate a CARP against respondent 1, leading to a moratorium and an additional 90 days of CARP. 2 resolution plans were received by RP, one authorized by respondent number 3 prior to the introduction of Section 29A of IBC. The IBC introduced Section 29A to the code. Amendment 2017 introduced Section 29A to the code. Respondent number 3
filed an application for declaration that he was not disqualified from submitting a resolution plan. The adjudicating authority ruled that there is no disqualification as per section under section 29AH of the code, as liability under guarantee arises only upon its invocation. Respondent number 3 could not be considered a defaulter for breach of guarantee. Respondent number 3 filed an application invoking section 60 of the code, and a further amendment to section 29AH came into effect 18 January 2018, which state that a person is not eligible to submit a resolution plan if they have executed an enforceable guarantee. Hmm. So Yes, argument advanced by the applicant. Respondent 3 was ineligible to submit a resolution plan under section 29AH of the code due to several personal guarantees signed in favor of different creditors of respondent number 1. The adjudicating authority ignored this information on both occasions, and even respondent number 2 was unable to present it. This means the presumption used by the adjudicating body to determine that respondent number 3 was qualified to submit a resolution plan is initially false. Section 29AH and 30 subsection 4 must be interpreted using the same analogy, meaning the disqualification becomes effective as of the application date. The fraud taints all solemn acts, so the appeal should be granted. Legal ineligibility cannot be removed by alleged estoppel. The appellant tribunal's order confirming the adjudicating authority's decision must be set aside as the applicant was not a party before it on previous occasions. तो चलिए देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इन शॉर्ट. एक्चुअली इशू क्या है इसमें? इशू ये है कि मिस्टर अंजनी कुमार लखोटिया has issued, he was a director of a company and issued personal guarantees. ठीक है, those guarantees were invoked and those remained unpaid. तो अब इशू इसमें क्या आया? इशू इसके अंदर ये आ गया कि 29A वाली बात थी. 29A क्या बोलता था? 29A बोलता था कि एक बार 29A पढ़ लेते हैं. 29A बोलता क्या है? 29A ये बोलता है कि सपोज देयर इज अ पर्सन रामलाल, ठीक है, ही हैज गिवन ए गारंटी, ठीक है. नाउ इफ ही हैज गिवन ए गारंटी एंड दैट गारंटी इज इन्वोक्ड and that remains unpaid, so in that case, and CIRP of the company is started due to, because that guarantee was invoked and there was a failure on the part of the guarantor, then that guarantor cannot become a resolution applicant. This is in brief 29AH. ठीक है, ये है 29AH. अब 29AH में क्या बोलता है ये? 29AH में ना पहले वर्ड क्या था? पहले वर्ड था एनफोर्सेबल गारंटी, ठीक है. अब एनफोर्सेबल गारंटी के बजाय वर्ड यूज कर लिया इन्होंने गारंटी, हैज एक्सिक्यूटेड ए गारंटी, ठीक है. एक तो ये पॉइंट चैलेंज किया गया था कि भाई वहां पर पहले वर्ड था एनफोर्सेबल और बाद में हो गया वर्ड गारंटी. और तीसरी बात ये थी इसमें कि जिस क्या लिखा है वर्ड उसमें, एच में लिखा है एंड सच गारंटी हैज बीन इन्वोक्ड बाय द क्रेडिटर एंड रिमेन्स अनपेड, ठीक है. तो इन्होंने ये कहा, ये पहले एक्चुअली जब ये इन्होंने अपना रेजोल्यूशन प्लान दिया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस 29A हैड नॉट कम, ठीक है. 29A आया बाद में. तो उन्होंने कहा भाई 29AH लगेगा बिकॉज ही हैज गिवन ए गारंटी एंड दैट गारंटी वाज इन्वोक्ड एंड दैट गारंटी रिमेन्ड अनपेड. इशू इसके अंदर ये था बेसिकली. कोर्ट ने क्या कहा कि पर्सनल गारंटर इज ओनली प्रिवेंटेड फ्रॉम सबमिटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान व्हेन द क्रेडिटर यूजिंग द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज डिस्क्रिशन हैज यूज्ड ए पर्सनल गारंटी
that the resolution applicant had executed in their favor. ठीक है. While Allahabad Bank and State Bank of Bikaner and Jaipur's use of a consortium guarantee is an ex-failure because of the inter se agreement between the members, RBL Bank did not invoke a पर्सनल गारंटी. इन्होंने कहा भाई आरबीएल एप्लीकेशन लगा रहा है और आरबीएल ने इन्वोक नहीं की है पर्सनल गारंटी, है ना. तो उन्होंने ये कहा भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसने भी इन्वोक की तो दूसरा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनका आपस का अरेंजमेंट है. तो ऐसा नहीं है कि जिसने गारंटी इन्वोक की है अगर उसी ने सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगाई हो तभी ये जो है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इनएलिजिबल होगा, ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि सपोज देयर आर 4 बैंक्स, ठीक है, suppose there are 4 banks and all they have received this guarantee. ठीक है. Now suppose a particular bank enforces the bank guarantee and that guarantee remains unpaid. So even if the other bank files the application for initiating CIRP, it is valid and it will be hit by the provisions of 29AH. वो जरूरी नहीं कि वही पर्टिकुलर क्रेडिटर ही बैंक गारंटी इन्वोक करे. ये था इशू इस केस. नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, स्टेट टैक्स ऑफिसर वर्सेस रेनबो पेपर. एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था कि नॉर्मली हमारा एक नोशन बना हुआ है, हम क्या मानते हैं कि भाई ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर कुड बी सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इवन ए ऑपरेशनल क्रेडिटर कुड बी ए सिक्योर्ड क्रेडिटर. और ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इट कुड बी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑल्सो. ठीक है. अगर हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ें तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 है, 31, section 3 subsection 31, and it says Right, title or yes. So it says security interest means right, title or interest or a claim to property created in favor of or provided for a secured creditor by a transaction which secures payment or performance of an obligation and includes mortgage, charge, hypothecation, assignment and encumbrance or any other agreement or arrangement securing payment or performance of any obligation of any person, provided that security interest shall not include a performance guarantee. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन सिक्योरिटी इंटरेस्ट कुड बी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है. क्योंकि गुजरात वैट एक्ट क्या बोलता है? गुजरात वैट एक्ट ये बोलता है कि इफ ए वैट डीलर इज हैविंग वैट ड्यूज, ठीक है ना, सो द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गुजरात वैट अथॉरिटीज विल हैव चार्ज अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टीज. दिस इज द गुजरात वैट एक्ट. गुजरात वैट एक्ट में लिखा हुआ है. तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गुजरात वैट authorities they become a secured creditor by virtue of this clause. ठीक है. सेक्शन 48 है. तो सेक्शन 48 में क्या है? It provides for first charge on the property of a dealer in respect of any amount payable by the dealer on account of tax, interest, penalty, etc. under the Gujarat VAT Act. ठीक है. So they said it cannot prevail over section 53. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस, एक तो यह कि थोड़ा सा क्लेम भी लेट फाइल हुआ था. तो उन्होंने कहा भाई अगर क्लेम लेट फाइल हुआ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, बुक्स में क्लेम एग्जिस्ट करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लेम फाइल करे, आप उसको अपने आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. सो देयर वाज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू लॉन्च अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज व्हिच आर स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर व्हिच रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैव आल्सो बीन इनिशिएटेड. कहता रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है तो आपको पता ही नहीं कि ड्यूज है कि नहीं. They were never called upon to produce materials in connection with the claim raised towards statutory. और भाई आरपी मंगा लेता क्लेम, क्या दिक्कत था? ठीक है. और वो ये कहता है कि भाई ये जो जितनी भी टाइमलाइंस है ना ये सब डायरेक्टरी है. Under the unamended provisions of Regulation 12(1) of CIRP regulations, the state tax officer was not required to file any claim. Read with Regulation 10, the appellant would only be required to substantiate the claim by production of such materials as might be called.
time stipulations are not mandatory, as is obvious from sub-regulation 2 of regulation 14, which enables the IRP or the RP, as the case may be, to revise the amount of claims admitted, including the estimates of claims. तो उन्होंने कहा कि in view of the statutory charge in terms of section 48 of Gujarat VAT Act, the claim of the tax department of the state squarely falls within the definition of security interest under section 3 subsection 31 of the code, and the state becomes a secured creditor under section 3 subsection 30 of the code. Such a security interest could be created by operation of law. तो उन्होंने कहा भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि it should be by way of agreement only, it could be created by operation of law. लॉ में लिख दिया उन्होंने, गुजरात वैट एक्ट में लिख दिया। तो जब गुजरात वैट एक्ट में लिख दिया तो इसका मतलब वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द कोड डज नॉट एक्सक्लूड एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो व्हेन ए ग्रीवेंस वाज मेड बिफोर द ए विद रिगार्ड टू ए रेजोल्यूशन प्लान, इसमें हुआ क्या था, प्लान पास भी हो गया था। The A was required to examine if the resolution plan met the requirement of section 30 subsection 2 of the code. The word satisfied used in section 31(1) contemplates a duty on the A to examine the resolution plan. The resolution plan cannot be approved by way of an empty formality. ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ना, A is mandatorily required to approve the resolution plan if a resolution plan meets the requirement. On the other hand, section 31 subsection 2, which enables the A to reject a resolution plan which does not conform to the requirements referred to in of section 31(1), uses the expression may. ठीक है। तो उन्होंने कहा बोला भाई ये जो है अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर है और इसका आपको क्लेम कंसिडर करना पड़ेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस टुलिप स्टार होटल्स, इसमें इशू क्या था बेसिकली? इसमें बेसिकली इशू ये था कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, दे हैड फाइल्ड सेक्शन 7 एप्लीकेशन इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट टुलिप स्टार होटल्स। ठीक है। टुलिप स्टार होटल्स चैलेंज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। इन्होंने बोला कि हमारा कोई प्रायर डिस्प्यूट है एंड क्वेश्चन सराउंडिंग द नेचर एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द डेट। अब क्वेश्चन इसमें ये था कि ये जो ARCIL का क्लेम है, वेदर इट इज ए वैलिड फाइनेंशियल डेट, एंड सपोज देयर आर सम पेंडिंग सिविल प्रोसीडिंग्स और डिस्प्यूट्स, वेदर दे बार द एडमिशन ऑफ ए सेक्शन 7 एप्लीकेशन, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 7 व्हाइल एडमिटिंग CIRP एप्लीकेशन। सो दीज वर द सम ऑफ द इश्यूज। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, द कोर्ट reiterated that under section 7 the adjudicating authority must only examine the existence of debt and default. ठीक है। Unlike section 9, for operational creditors, disputes are not relevant for financial creditors at the admission stage. इसमें इन्होंने कहा भाई हमारे तो डिस्प्यूट है। उन्होंने कहा अगर डिस्प्यूट है, कोई पेंडिंग सिविल प्रोसीडिंग है, तो भी सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लग सकती है। ठीक है। Existence of civil proceeding is not a bar. Dependency of suits or arbitration proceedings does not prevent the admission of section 7 application. ठीक है। लेकिन यही अगर सूट और आर्बिट्रेशन सेक्शन 9 वाले में हो तो फिर एप्लीकेशन नहीं एडमिट होगी। ठीक है। The IBC provides a summary remedy and civil litigation does not override this special mechanism. So debt was valid and enforceable. The court held that ARCIL had established a valid financial debt which arose from financial facilities extended and assigned to it. The debt was due and payable, and there was no bar under law to its enforceability. तो डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल। NCLT had rightly admitted the application having found sufficient evidence of debt and default, and civil suits or contractual disputes do not prevent insolvency proceedings under section 7. ठीक है। So क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7 focuses solely on debt and default, not broader commercial disputes. It strengthened the role of financial creditors in initiating CIRP and reinforced the priority of the IBC mechanism over other civil remedies in case of financial default. ठीक है। तो ये केस था। नेक्स्ट केस है हमारा सुंदरेश भट्ट, लिक्विडेटर ऑफ ABG शिपयार्ड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये दिस केस लॉ इज बेस्ड ऑन सेक्शन 14 मॉरिटोरियम। कि भाई एक बार मॉरिटोरियम लग गया
तो क्या कस्टम्स अथॉरिटीज वेदर दे कैन initiate recovery proceedings? The answer is no. Whether they can initiate assessment or reassessment? The answer is yes. Assessment कर सकते हैं, recovery नहीं कर सकते. ठीक है. तो ABG Shipyard is a company in the business of shipbuilding and thus regularly imports various materials for the purpose of constructing ships. अब इनके कुछ गुड्स जो थे वो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में पड़े थे. ठीक है. CIRP इनिशिएट हो गई. IRP was appointed and he sought for custody of the warehouse goods. इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से कहा भाई मेरे सिंस आई बीन अपॉइंटेड एज IRP तो मुझे कस्टडी एंड कंट्रोल दे, है ना, एंड रिक्वेस्टेड देम नॉट टू डिस्पोज ऑफ और ऑक्शन द सेम. Thereafter, from 29/3/2019 to 7/4/2019, the respondent issued 5 different demand notices. अब इन्होंने CIRP कब इनिशिएट हुई है? 2 अगस्त 2017 को. ठीक है. और डिमांड नोटिस कब आ रहे हैं? 29 मार्च 2019 टू 7/4/2019. ठीक है. पहली बात तो ये जो कस्टम्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है? ऑपरेशनल. ऑपरेशनल है. ठीक है ना. अब इन्होंने जो डिमांड नोटिस इशू किया है ये CIRP डेट के बाद में इशू किया है. पहली बात तो ये. The respondent then filed an appeal before NCLAT, challenging the order passed by the NCLT. NCLAT allowed the appeal, thereby directing that the warehouse goods can be released or disposed of as per applicable provisions of Customs Act by the proper officer. तो NCLT ने तो एडमिट कर ली थी अब इनिशिएशन ऑफ CIRP, लेकिन NCLAT में चला गया ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. तो NCLAT ने क्या कहा? NCLAT ने कहा जो वेयर हाउस गुड्स है दे कैन बी रिलीज और डिस्पोज्ड ऑफ. भाई प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है. ठीक है. तो ये जो अपेलेंट है ही फाइल्ड है सिविल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. ये जो सुंदरेश भट्ट है ना, ये प्रोफेशनल था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसने फिर अपील फाइल की बिफोर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज फ्रेम्स द इश्यूज. तो पहला तो ये था कि वेदर द प्रोविजंस ऑफ IBC वुड प्रिवेल ओवर द कस्टम्स एक्ट, and if so, to what extent? Second, whether the respondent authorities under the Customs Act could claim title over the goods and issue notice to sell the goods in terms of the Customs Act when liquidation process has been initiated. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम्स एक्ट और IBC दे एक्ट इन देयर ओन स्फीयर्स. ठीक है. However, a bare perusal of section 142A of the Customs Act provides that the customs authorities would have first charge on the assets of an SSC under the Customs Act, except with respect to cases under section 529A of the Companies Act, RDB Act 1993, SURFACI and IBC. वो एक्सेप्शन लिखा हुआ है एक्ट के अंदर ही, कस्टम्स एक्ट में ही एक्सेप्शन लिखा हुआ है. ठीक है. Such an exception created under the Customs Act is also acknowledged under section 238 of the IBC, wherein an overriding power is given to IBC against any other law that may be inconsistent to it. ठीक है. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया. Another reason for the IBC to prevail over the Customs Act observed by the Supreme Court was that the IBC, being more recent statute, clearly overrides the Customs Act. ठीक है. क्योंकि दोनों सेंट्रल लेजिस्लेशन है, लेकिन इसने कहा कि ये मोर रिसेंट इशू है तो it clearly overrides the Customs Act. Further, the Supreme Court observed that prior to IBC, different statutes were resulting in the parallel proceedings, and one of the objectives behind the enactment of the IBC was to end the conflict between different statutes. ठीक है. इसको मैं स्टैट्यूट्स कर देता हूं. तो उन्होंने कहा भाई ये जो है जो CIRP स्टार्ट की है पूरा कस्टडी एंड कंट्रोल इसको देना पड़ेगा. IBC विल प्रिवेल ओवर कस्टम्स एक्ट. नेक्स्ट केस है हमारा सुनील कुमार जैन वर्सेस सुंदरेश भट्ट एंड अदर्स. इस केस में था क्या? इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द इंट्रिकेसीज दैट अरोज ऑन द क्लेम फॉर पेमेंट्स ऑफ वेजेस सैलरीज बिफोर CIRP, ड्यूरिंग CIRP एंड ड्यूरिंग लिक्विडेशन. By during CIRP, what happens is that some employees are working, others are not working. So whether the wages of all the employees will be included in the insolvency resolution process cost, this is the issue. तो उन्होंने ये कहा
कि जो वर्कमैन जिन्होंने काम किया है सीआईआरपी पीरियड में, उन्हीं की जो वेजेस है वो सीआईआरपी कॉस्ट में इंक्लूड होगी, सबकी नहीं होगी। ठीक है। तो NCLT dismissed an appeal preferred by the workmen employees of ABG Shipyard Limited against NCLT's order denying relief to them with regard to their claim relating to salary for the period involving CIRP and the period prior thereto. Aggrieved by the said order, the workmen employees they preferred appeal before the Honorable Supreme Court. तो इशू क्या था इसमें? इशू dealt with was respect to wages, salaries of the workmen employees during CIRP period and the amount due and payable to the respective workmen employees towards pension fund, gratuity fund and provident fund. देखिए, जहां तक पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और प्रोविडेंट फंड की बात है, तो दिस इज आउटसाइड द लिक्विडेशन एस्टेट, है ना। तो ये तो जो है इट विल, और उन्होंने ये कहा कि कंटेंशन इसमें ये था, द appellants workmen employees contended that the salaries and wages and the dues payable to them during CIRP period will be qualified as CIRP cost. ठीक है। एंड इट वाज फर्दर सबमिटेड, 2 पॉइंट थे इनके, और दूसरा ये था कि जो पीएफ, ग्रेचुटी और पेंशन फंड है, इट रिमेन्स आउटसाइड द लिक्विडेशन एस्टेट। और रिस्पोंडेंट ने क्या कहा? रिस्पोंडेंट ने कहा कि वेजेस एंड सैलरीज हु हैव डन नो वर्क ड्यूरिंग सीआईआरपी, भाई किन्होंने काम ही नहीं किया, and have not assisted the RP or liquidator during the CIRP would not fall within the parameters of CIRP cost. तो अब इसमें क्या हुआ कि दो तरह के लोग हो गए, एक वो जिन्होंने CIRP पीरियड में काम किया, दूसरे जिन्होंने CIRP पीरियड में काम नहीं किया। ठीक है। तो क्या कंक्लूजन था? कंक्लूजन ये रहा कि क्लेम्स टुवर्ड्स वेजेस एंड सैलरीज फॉर द पीरियड ड्यूरिंग CIRP कैन ओनली बी इंक्लूडेड इन द CIRP कॉस्ट if it is established that the IRP or RP manage the operations of the corporate debtor as a going concern during the CIRP and that the concerned workman employee actually worked during the CIRP and not otherwise. ठीक है। उसने काम किया है तो CIRP कॉस्ट में इंक्लूड होगा, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। पॉइंट ये था। ठीक। और बाकी OPF, ग्रेचुटी फंड, वो तो खैर दैट फॉल्स आउटसाइड द लिक्विडेशन एस्टेट, उसमें तो कोई इशू ही नहीं। नेक्स्ट केस था इसमें विक्ट्री आयरन वर्क्स लिमिटेड वर्सेस जितेंद्र लोहिया। इसमें क्या था? इसमें ये था कि होता क्या है कि जब कंपनियां शुरू करते हैं ना, तो बेसिकली लैंड ओनर एक होता है ना, डेवलपर होता है दूसरा। वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक पार्टी के पास लैंड होती है, दूसरे के पास वो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो आपस में कर लेते हैं भाई, इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे। तो डेवलपमेंट राइट्स जो है, इसमें क्वेश्चन ये था कि डेवलपमेंट राइट्स क्रिएटेड इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 27, क्योंकि सेक्शन 327 जो है वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, एंड वुड कॉन्स्टिट्यूट एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 18F एंड सेक्शन 25(2)(e). अब बात ये थी कि ये जो डेवलपमेंट राइट्स है, वेदर इट इज एन एसेट, क्योंकि अगर एसेट है तो टेक ओवर करेगा, वेदर इट इज ए प्रॉपर्टी, exclusion of assets owned by a third party but in possession of corporate debtor held under contractual arrangements from definition of expression assets is limited to section 18. In other words, explanation under section 18 does not extend to section 25. इस बात को समझने के लिए हमारे को क्या करना है कि सेक्शन 18 और सेक्शन 25 को एक बार देख लेना है। सेक्शन 18F देखिए एक बारी। सेक्शन 18F अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहता है? टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी यस, तो वो ये कहता है यहाँ टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी एसेट ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट्स। ठीक है, एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। हाँ, अब ये कहता है इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेनेशन, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। एक्सप्लेनेशन कौन सी दे रखी है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म एसेट्स शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एसेट्स। पहला, एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी, है ना, तो वो उसके अंदर शामिल नहीं है। और 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 वो बोलता है कि सेक्शन 25 में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25(2)(a) अगर हम देखें तो ये कहता है कि टेक इमीडिएट कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो बेसिकली क्या है इसमें कि ये जो
इशू ये आ गया था इसमें कि जो डेवलपमेंट राइट्स है ये एसेट है, वेदर इट इज एसेट, वेदर इट इज ए प्रॉपर्टी, क्वेश्चन इसमें ये था। कॉर्पोरेट डेटर था इसमें अवनी टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, और प्रॉपर्टी कोई लैंड पार्सल था वेस्ट बंगाल में, और लैंड जो थी ना इट वाज लीगली ओन्ड बाय ईपीपीएल, एनर्जी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और एटीपीएल जो है ये अवनी टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका 40% शेयर कैपिटल था और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था विद ईपीपीएल, ठीक है। और ये कॉर्पोरेट जो अवनी टावर एटीपीएल है इसके पास लैंड थी, और विक्ट्री आयरन वर्क्स क्या था, इट ऑक्युपाइज ए पोर्शन ऑफ द लैंड अंडर ए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड क्लेम्स एडिशनल ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन, ये डेवलपर था बेसिकली विक्ट्री आयरन वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। और विक्ट्री आइलैंड वाज आई थिंक ये दिस वाज द मैन्युफैक्चरर आई थिंक, सो वो लैंड में कुछ दूसरी कंपनी आई थिंक ये। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ये ईपीपीएल जो थी, ईपीपीएल थी जो एक्चुअली मैं इस केस में ईपीपीएल था, डेवलपर था। मैं आई वर्क विद लोहिया जी, सो आई वाज पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट एक्चुअली। अच्छा, हाँ लैंड जो थी इट वाज लीगली ओन्ड बाय एनर्जी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। हाँ, which acquired it with financial assistance from ATPL. और विक्ट्री आयरन वर्क्स लिमिटेड ऑक्युपाइज ए पोर्शन ऑफ द लैंड अंडर ए लीव एंड लाइसेंस, भाई इसको लैंड के कोई ऑक्युपेशन दिया होगा ना, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट था इसके पास। यस सर, WIPL का वहाँ पे वर्कशॉप था एक्चुअली। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं गया था वहाँ साइट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये था कि इन अक्टूबर 2019 दिस अवनी टावर्स प्राइवेट लिमिटेड which owned the land, है ना, and which was into CIRP. The RP sought to include the development rights over the entire property in the information memorandum, ठीक है। और EPPL and VIWL they opposed this inclusion, arguing that the property was not an asset of the corporate debtor. भाई उसने क्या डेवलपमेंट राइट्स को इंक्लूड किया इसके अंदर, तो जो दूसरी पार्टी थी, जो डेवलपर था या जो इसके पास वर्कशॉप थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीडी के एसेट्स नहीं है डेवलपमेंट राइट्स। तो इशू ये आया कि ये जो डेवलपमेंट राइट्स है ये इसके एसेट्स है या नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन दीज अपील्स वाज द लैंड ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ अबाउट 10 एकर्स, ठीक है। कंपनी ई विच वाज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ द सेड प्रॉपर्टी इन हुज नेम द टाइटल स्टैंड्स, कंपनी ए which was the corporate debtor in respect of whom CIRP had been initiated, not only provided finance to company E for the purchase of the said property, but also holds 40% of the share capital in E, है ना, apart from holding a joint development agreement. और जो एप्लीकेंट जो जिसके पास वर्कशॉप थी, एप्लीकेंट वी वाज क्लेम टू बी इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एंटायरिटी पार्टली बाय वर्च, इसके पास लीव लाइसेंस एग्रीमेंट था, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आए ये थे कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट और इंटरेस्ट दैट द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओवर द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द इंक्लूजन ऑफ द सेम इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। एंड वेदर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी हैव एक्सरसाइज्ड द जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन them in law by seeking to recover protect the possession of the corporate debtor. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, the court noted that while the IBC does not explicitly define asset, asset defined नहीं है IBC में, the term encompasses a bundle of rights and interests held by the corporate debtor. These rights arising from the joint development agreement and financial contributions qualify as property under section 3 subsection 27 and thus as assets under section 18F and 25(2)(a), ठीक है। Inclusion in CIRP. The court held that the development rights held by Avni Tower Private Limited over the property are to be included in the CIRP process. RP is entitled to take control of these rights and include them in the information memorandum, ensuring they are considered in the resolution plan. ठीक है। Then jurisdiction over third party occupants. Regarding VIW's occupation beyond the licensed area, क्यों एक तो कुछ तो लाइसेंस था, कुछ उसने और भी ऑक्यूपाई कर रखा था। The court upheld the decision of NCLT and NCLAT which protected VIWL's rights over the 10,000 square feet covered by the leave and license agreement, but did not recognize claims over the entire property. The court affirmed that insolvency authorities have jurisdiction to manage
assets of the corporate debtor, including development rights, and can seek assistance from local authorities to prevent obstruction. ये केस था. अगला केस है अभिषेक सिंह वर्सेस हुतामकी पीपीएल लिमिटेड. बेसिकली इसमें इशू क्या है कि whether suppose COC has not been constituted, so whether a withdrawal application can be made, इशू इसके अंदर ही है. तो सेक्शन 12A does not specifically mention withdrawal of CIRP applications. अगर हम सेक्शन 12A को पढ़ें तो सेक्शन 12A में क्या बोलता है? वो बोलता है विद 90% मेजोरिटी. ठीक है. 12A में बात करता है the adjudicating authority may allow the withdrawal of application admitted under section 7 or 9 or 10 on an application made by the applicant with the approval of 90% voting share of the committee of creditors in such manner as may be prescribed. ठीक है. वो बात अलग है कि हमें वो रेगुलेशंस में जा करके वो बताता है. रेगुलेशन इसका है 30A. रेगुलेशन अगर हम इसको पढ़ें तो वहां पर वो बात करता है कि दोनों सिचुएशंस की, कि भाई अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो क्या होगा, अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है तो क्या होगा, है ना. रेगुलेशन 30A है हमारा विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन. तो इसमें इशू ये आया कि भाई because section 12 it does not specifically mention withdrawal of CIRP applications where COC has not been constituted, but at the same time it does not debar entertaining applications for withdrawal even before constitution of COC, and therefore application filed under section 12A for withdrawal cannot be said to be kept pending for constitution of COC even where such application was filed before constitution of COC. ठीक है. उन्होंने कहा अगर कोई एप्लीकेशन आ गई तो ये नहीं कि भाई COC कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी 90% मेजोरिटी होगी तभी डिसाइड हो, उससे पहले भी डिसाइड हो सकता है ना. होता क्या है कई बार ना पेमेंट हो जाती है, जब पेमेंट हो गई सेटलमेंट हो गया तो फिर विड्रॉ हो जाएगा. तो डराने के लिए भी IBC इन्वोक किया जाता है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है बिल्कुल. तो कैन एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ CIRP अंडर सेक्शन 12A be entertained before the constitution of COC, especially if a settlement has already been placed. तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अलाउड दिस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, हो सकता है. ठीक है. The application had been filed prior to the constitution of COC. The settlement had been arrived at within 2 days of the admission order. Admission जब हुआ उसके 2 दिन के अंदर ही सेटलमेंट हो गया. पेमेंट हो गई. पेमेंट as per the settlement had been made within the next 5 days. That is in a week's time from the date of admission. The application for withdrawal was filed on the 10th day. NCLT ought to have immediately taken the decision on the application. Once the parties had settled the dispute, even before the COC had been constituted, the application ought to have been allowed then and there, rather than await the other creditors to jump into the fray and allow the IRP to proceed further. ठीक है. नेक्स्ट केस है मोजर बियर कर्मचारी यूनियन थ्रू प्रेसिडेंट महेश चंद शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इन्होंने ये कहा कि भाई द पिटिशनर्स चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 327(7) ऑफ द कंपनीज एक्ट which excludes the applicability of section 326 and 327 in cases of liquidation under the IBC. थोड़ा सा फर्क है. जो हमारा सेक्शन 326 और 27 है कंपनीज एक्ट का, उसमें और जो लिक्विडेशन है 53 में, उसमें देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. तो दे आर्ग्यूड दैट दिस एक्सक्लूजन एडवर्सली अफेक्टेड द प्रायोरिटी ऑफ वर्कमैन ड्यूज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन इसमें ये था क्योंकि जब ये IBC नहीं आया था तो लिक्विडेशन जो कंपनीज था वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता था. कंपनीज एक्ट में भी देयर इज ए प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे IBC से. तो उन्होंने कहा कि IBC में आने से क्या हुआ कि देयर interests have been adversely affected and it is violative of article 14 and 21 of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IBC provides a comprehensive and time-bound framework for insolvency resolution and liquidation, distinct from the Companies Act. The exclusion of section 326 and 327 in the IBC proceedings were intentional to make this
to maintain this distinct framework. So waterfall mechanism, section 53 outlines a waterfall mechanism for the distribution of assets during liquidation. Under this mechanism, worksmen dues for the period of 24 months preceding the liquidation commencement date are treated pari passu with the dues of secured creditors who have relinquished their security interest. The court held that section 327 subsection 7 of the Companies Act is not arbitrary or violative of Article 14 and 21. The provision serves the objectives of the IBC to create a uniform insolvency framework and balances the interest of various stakeholders. So the court dismissed the writ petitions upholding the validity of section 327(7) and affirming the applicability of IBC provisions in liquidation proceedings. ठीक है, तो 53 को अपहोल्ड किया था. अब देखिए 32 क्या बोलता है? एम सुरेश कुमार रेड्डी वर्सेस कैनरा बैंक. ये केस ये कहता है कि once NCLT is satisfied that default has occurred, there is hardly a discretion left with NCLT to refuse admission of application under section 7. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दूसरा केस लॉ पढ़ा था. उसमें क्या था? हैं? May and shall. हाँ, उसमें लिखा था 7(5) and 9(5). हाँ, उसमें लिखा था भाई डिस्क्रिशन है. ये बोल रहा है डिस्क्रिशन नहीं है. इसमें क्या इशू था? ये एम सुरेश कुमार रेड्डी वाज दी सस्पेंडेड डायरेक्टर ऑफ द सीडी. ठीक है. नाउ कैनरा बैंक, ये सीडी था क्रांति एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड. कैनरा बैंक फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 अगेंस्ट सीडी फॉर डिफॉल्ट. ठीक है. NCLT admitted the application and initiated CIRP. The appellant challenged this order before the NCLT, which dismissed the appeal. Subsequently, the appellant approached the Supreme Court. ठीक है. इसमें क्या क्या फैक्ट्स थे? सिंडिकेट बैंक वाज मर्ज्ड इनटू द रिस्पोंडेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक. ठीक है. सिंडिकेट कैनरा के साथ मर्ज हो गया था ना. एंड कॉर्पोरेट डेटार हैड अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बैंक. लेटर ऑफ सैंक्शन वाज इशूड. ठीक है. Since the liability of the corporate debtor was outstanding, the financial creditor bank filed an application under section 7. NCLT admitted. Aggrieved, the appellant suspended director filed an appeal before the NCLT. NCLT dismissed the said appeal. The appellant filed instant appeal before Supreme Court that NCLT was not under an obligation to admit the application filed under section 7, and for good reasons the NCLT could have refused to admit the application filed under section 7. उन्होंने कहा भाई कोई जरूरी नहीं है सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन को एडमिट करना. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि once NCLT is satisfied that the default has occurred, there is hardly a discretion left with the NCLT to refuse admission of the application. Thus, even the non-payment of a part of the debt when it becomes due and payable will amount to default on the part of the corporate debtor. ठीक है. In such a case, an admission order under section 7 must follow if the NCLT finds that there is a debt but it has not become due and payable. The application under section 7 can be rejected. Otherwise, there is no ground available to reject the application. In instant case, it must be noted that the amount payable by the CD also included the amounts repayable under fund-based credit facility of secured overdrafts. The facility granted to the corporate debtor was not confined to bank guarantees. भाई कई fund-based facility होती हैं, कुछ non-fund-based facility होती है ना? Moreover, a demand notice under 13(2) of the Surface Act was issued, and as the corporate debtor did not honor the said notice, the original application for recovery has been filed by the respondent before DRT. Moreover, the CD acknowledged the debt on 5/5/2019 to the extent of 63 crores. Moreover, the balance sheet reflects the said liability. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि once NCLT is satisfied that a financial debt exists and default has occurred, it is obligated to admit the application. The court emphasized that the NCLT doesn't have discretionary power to reject such applications based on extraneous considerations. Now, this is distinct from the Vidarbha judgment.
The appellant relied on Supreme Court decision in Vidarbha Industries Power Limited versus Axis Bank, arguing that the NCLT has discretion to reject applications even when debt and default are established. However, the court clarified that the Vidarbha judgment was based on its unique facts and does not establish a general rule. Okay? The court reaffirmed the principles laid down in Innovative Industries and E.S. Krishnamurthy, which mandates admission upon proof of debt and default. Okay? One-time settlement proposals. The appellant contended that the bank's refusal to accept OTS proposals should have been considered. Okay? The court noted that while OTS negotiations may be ongoing, they do not impede the initiation of CIRP once default is established. Bank guarantees and alleged defaults. The appellant argued that the bank's refusal to extend bank guarantees led to the default. उन्होंने भाई इन्होंने हमारी बैंक गारंटी एक्सटेंड नहीं की, इस चक्कर में डिफॉल्ट हो गया. The court observed that bank guarantees are independent contracts and their invocation does not negate the existence of default on the primary debt obligation. ठीक है. So this judgment reinforces the mandatory nature of admitting applications under Section 7. It distinguishes the Vidarbha decision as case specific and not a precedent for discretionary rejection of applications under Section 7. The ruling provides clarity for financial creditors and corporate debtors regarding the initiation of insolvency proceedings. Next देखिए, Blue Creek Capital Private Limited versus State of West Bengal. प्रदीप जी पढ़िए जरा एक बारी. 33. IBC. Yeah. आज कोशिश So करेंगे where हम 40 के 40 कम से कम कर दें, सारे कंप्लीट कर दें. सुप्रीम कोर्ट तो करना चाहिए. चलिए. okay. हाँ जी. So where petitioner unsecured creditor challenged interim order of High Court extending transit anticipatory bail granted to the respondents suspended directors of corporate debtor, but petitioner was neither informant nor a party to the proceedings pending before High Court and was totally unconnected with FIR lodged against the respondents by financial creditor. Petitioner had no locus in matter and thus special leave petition filed against the court was to be dismissed. Corporate debtor Leading Hotels Limited undergoing insolvency proceedings under IBC. Applicant Gluckrich Capital Private Limited, an unsecured financial creditor of LHL. Respondents State of West Bengal and others, including individuals who were granted transitory and anticipatory bail by the Delhi High Court. Facts. The CRP was initiated against the corporate debtor and the RP was appointed. During the pendency of CRP before the NCLT, an order was passed directing the RP not to proceed with the approval of resolution plan. Thereafter, the petitioner, unsecured financial creditor of corporate debtor, filed appeal against the said order before NCLAT, and the same was dismissed by the NCLAT. The financial creditor, who were also members of the COC, lodged FIR against the respondent number 3 to 5, who were suspended directors of the corporate debtor. Held. The petitioner contends that the petitioner is an interested party to challenge the extension of anticipatory transit bail granted to the respondents who were suspended directors of the company, against which CRP proceedings are pending under IBC. It is pertinent to note that the order impugned by the petitioners arises out of the proceedings initiated by the respondents before High Court, challenging the FIR lodged against them. It is an admitted fact that the petitioner is neither informant nor a party to the proceedings pending before the High Court and is totally unconnected with the FIR lodged by the financial creditors, who are also members of the Committee of Creditors. In view of the facts and circumstances, it is opined that the petitioner has no locus in the matter and thus the permission to file special leave petition is dismissed. एक्चुअली ये कहता है भाई लोकस स्टैंडी इसका कुछ नहीं है. जिसने एप्लीकेशन फाइल की है इज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर. और इस क्योंकि क्या है वो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें ट्रांजिट रिमांड देते हैं वो. तो इसने ये कहा कि ही चैलेंज दिस बेल प्ली बेसिकली. The directors. हाँ.
तो उन्होंने कहा अगर आपका लोकस स्टैंडी नहीं है तो भाई आप फिर ये यू कैनॉट फाइल दिस SLP। Scope of section 66. हाँ, एक The बार court सेक्शन 66 को भी पढ़ लेते हैं। तो 66 अगर पढ़ लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सेक्शन 66 क्या बोलता है? सेक्शन 66 बोलता है आपका फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग। ठीक है। सो इट सेज इफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स दे आर एंगेज्ड in this wrongful trading or fraudulent trading, then the adjudicating authority on the application of RP or liquidator, लिखा नहीं है but it is understood, they may pass an order that there may be personal liability attached to them, है ना? तो basically this is the section 66, fraudulent trading or wrongful trading. So it says that 66(1) it empowers the adjudicating authority to pass orders against persons who are knowingly parties to the fraudulent transactions. So this provision does not extend to third parties or external entities that had business dealings with the corporate debtor but were not involved in its management or operations. ठीक है। तो 66(1) क्या बोलता है बेसिकली? अगर 66(1) हम देखें, if during CRP हाँ, or liquidation process, it is found that any business of corporate debtor has been carried on with an intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose, the adjudicating authority may, on the application of the RP, pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of business in such a manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. so actually it fastens personal liability on the directors Correct. in case they are doing some fraudulent trading or wrongful trading. Correct. So this is section 66 subsection 1. So Supreme Court declined to provide the clarification sought by Glue Creek, stating that the application was an indirect attempt to revisit the earlier dismissal of the SLP. The court maintained that its previous order did not preclude the resolution tribunal from considering appropriate actions under the IBC, but reiterated the limitation of 66 concerning third party. वो बोला कि RP can make a complaint in this. ठीक है ना? वो ये कहता है कि बेसिकली द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द आरपी। अब यहाँ ये आरपी नहीं है पार्टी, जो ग्लू क्रिक है ना, ही इज नॉट ए पार्टी, ही इज नॉट ए आरपी। उन बार आरपी की एप्लीकेशन पर 66(1) में आरपी की एप्लीकेशन पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल फासन द पर्सनल लायबिलिटी। यहाँ जो ग्लू क्रिक ने एप्लीकेशन फाइल किया 66(1) में, ही इज नॉट ए आरपी, Unsecured. क्या है? अनसिक्योर्ड Unsecured. फाइनेंशियल क्रेडिटर है Financial debtor. Yes. ना? तो दिस रूलिंग डिलीनेट्स द बाउंड्रीज ऑफ सेक्शन 66, affirming that its provisions are confined to individuals directly involved in the corporate debtors management who have conducted business with fraudulent intent. Third parties or external entities, even if they engaged in transactions with the corporate debtor, are not subject to proceedings under this section. Resolution professionals seeking redress against such third parties must explore alternative legal remedies outside the purview of section 66. नेक्स्ट देख लीजिए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्सेस रमन इस्पात। पढ़िए प्लीज 34। Yeah, IBC. Dues of a secured creditor who relinquished his security have much higher priority under section 53(1) than the dues of secured creditor who opts to enforce his security interest. IBC, where appellant electricity supplier had government participation and its functions could be replicated by other entities, both private and public. Dues or amounts payable to the electricity supplier towards supply of electricity were not government dues. The appellant was secured creditor under IBC. During insolvency resolution process, a secured creditor is not permitted to realize its dues by initiating any proceedings. This is by virtue of section 14(1)(c), which enables imposition of a moratorium period, during which a secured creditor is precluded from bringing any action to foreclose, recover, or enforce any security interest. Secured creditors' rights are restored only in the event failure of insolvency resolution process at the stage of liquidation.
Timeline of events. In 2010, PVVNL entered into an agreement with Raman Ispat Private Limited for supply of electricity, stipulating that outstanding dues would constitute a charge on the company's assets. Due to unpaid electricity dues, PVVNL attached the corporate debtors' properties in January 2016. In April 2017, Raman Ispat Private Limited initiated a CARP under Section 10 voluntarily of the IBC. The CARP was unsuccessful, leading to liquidation order in January 2018. PVVNL sought to recover its dues by auctioning the attached properties, but the liquidator contested this action, asserting that the assets distribution should follow the IBC provisions. Facts. Corporate debtor entered into an agreement with appellant PVVNL for supply of electricity, which provided that the outstanding electricity dues would constitute a charge on its assets. Clause 8 of the agreement mentioned that the parties would be governed by 2003 Act. PVVNL, an electricity supplier, raised the bills for supply of electricity to the corporate debtor from time to time. Since the dues remained unpaid, PVVNL attached the corporate debtor's properties. The corporate debtor initially underwent resolution process under IBC. However, that process was not successful. It therefore becomes subject to liquidation. Liquidator alleged that unless attachment orders of the district high collector and tahsildar were set aside by NCLT, no buyer would purchase the property of corporate debtor due to uncertainty about the authority of liquidator to sell the property. The liquidator also took the plea that PVVNL claim would be classified in the order of priority prescribed under Section 53 of IBC. PVVNL would be entitled to pro rata distribution of proceeds along with the other security creditors from the sale of liquidation assets. Definition of security creditor, which meant a creditor in favor of whom security interest is created. Such security interest was defined under IBC, a right, title, interest, or a claim in a property created in favor of or provided for a secured creditor by transaction which secures payment or performance on obligation and includes mortgage, charge, hypothecation, assignment, and encumbrance or any other agreement or arrangement securing payment or performance of any obligation of any person. The priority of claims indicated in hierarchy of preference under the waterfall mechanism is therefore firstly insolvency process cost ये तो and हमें liquidation 53 वाला cost. तो पता ही है, ठीक है ना? Correct, आगे correct, चलते sir. हैं, ये आगे Correct. ये देख लीजिए। IBC supremacy. The Supreme Court held that Section 238 of IBC, which contains a non-abstained clause, overrides the conflicting provisions in other laws, indicating the Electricity Act 2003. This means that during insolvency proceedings, the IBC's provisions take precedence over those of Electricity Act. The classification of PVVNL claim. The court determined that PVVNL claim for unpaid electricity dues classifies it as an operational creditor under IBC. Consequently, PVVNL's recovery of due must adhere to the IBC's framework, specifically the waterfall mechanism outlined in the Section 53, which optimizes claim during liquidation. Distinction from rainbow paper case. क्योंकि रेनबो में क्या PVVNL. बोला था? रेनबो में बोला था वो गुजरात जो वैट एक्ट वाला Yeah, केस yeah, था। VAT Act, yes, yes. So they have a charge referenced the Supreme Court's decision in State Tax Officer versus Rainbow Papers Limited to support its claim. However, the court distinguished the present case, noting that Rainbow Papers didn't consider the IBC's waterfall mechanism and pertain to a resolution process. उन्होंने कहा भाई Whereas वहां the current 53 की case, बात ही नहीं थी रेनबो में, वहां तो रेजोल्यूशन हो रहा था ना, तो रेजोल्यूशन में तो 53 डजंट कम इनटू प्ले। whereas the current case involves liquidation. So release of attached properties. The court upheld that NCLT and the inclined decision to release the attached properties to the liquidator, facilitating their sale and the equitable distribution proceeds among creditors as per the IBC. So the court upheld the NCLT. So significance. This judgment reinforces the IBC's overriding effect of other statutes in the matters of insolvency and liquidation, ensuring a uniform and equitable process for the distribution of
corporate debtors' assets. It clarifies that the statutory dues, such as electricity charge, do not automatically grant the creditor a secured status outside the IBC's provisions. Creditor must participate in the insolvency process and recover the dues in accordance with the IBC. It's a established hierarchy. So this was the Yes, decision. correct. नेक्स्ट देख लीजिए, विशाल चेलानी एंड अदर्स वर्सेस देवाशीष नंदा। सर मैं रिक्वेस्ट समथिंग सर। यस प्लीज। ये सर अभी और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से चला जाए। कोई बात नहीं, इतना कर लेते हैं, आगे अगली क्लास में कर लेंगे ना इश्यूज। और सर मैं जो बोल रहा था कि जिन्होंने बोला था 8 से स्टार्ट करने को, वो तो अटेंड कर ही नहीं रहे हैं क्लास। वही तो ना, एक बार ग्रुप में लिख दीजिए, एक बार ग्रुप में लिख दीजिए भाई, देखो जो कह रहे थे कि वो खुद ही नहीं अटेंड करते, सही बात है। अपने को तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप में लिख दीजिए, हमें क्या है, कर लेंगे। Sir, let's have a majority, like हाँ, voting. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं क्या करना। एक बार ग्रुप में लिख दीजिए, देखो सभी लोग एग्री हो जाए तो बेस्ट है ना, वो तो है ना। एक नहीं, बार क्योंकि लिख दीजिए, मुझे कोई पर्सनल कोई ऑब्जेक्ट नहीं एक्चुअली आई स्टे फार अवे फ्रॉम माई होम, मुझे 1.5 घंटा लगता है घर पहुंचने में। है। मैं अभी समझ मैं गया आपकी निकलूंगा बात, तो एक बार 11 बोल तक दीजिए, पहुंचूंगा। एक बार बोल Yeah, दीजिए। fair, sir. Yeah. हाँ ना, ठीक, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा अगर जल्दी Sure, होगा sir. तो हम लोग थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं वैसे, अदरवाइज क्या कि अब घर निकलने की जल्दी रहती है फिर। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। ओके।